Shukrana Guruji. First of all, I would like to request all the Sangat to please be seated as we start the reading of the Holy Shivpuran. With Guruji's grace, we're reading the Shivpuran at Guruji Ka Ashram, Somerset, every Monday after the Mantra Jap. And if you're interested in participating in the reading, kindly contact me. Last week we read chapter 14 and 15 of the Vidyeswarasamhita. In this we read that the sages requested Suji to expound on the different kinds of rites and sacrifices, namely the fire sacrifices, sacrifices made into different kinds of gods, and Dev Yagna, Brahma Yagna, worship of the preceptors and gratification of the Brahmins, to which Sutaji explained to them that any kind of sacrifices and offerings that are made into the fire are called as Agni Yagna. If Agni Yagna is performed in the morning to appease sun god, then it is beneficial for the longevity, and if it is performed in the evening, it bestows prosperity. He also said that if a person performs these sacrifices and offerings in a way to appease Indra and other gods, then it is called Dev Yagna. He said the study of Vedas is called Brahma Yagna, and all Brahmins must constantly do that for appeasing different kinds of gods. He highlighted that Lord Mahadeva created different days of the week for the benefit of the entire world, and different deities and gods need to be worshipped on specific days, and that bestows different kinds of merits. For example, if Goddess Lakshmi is worshipped on Monday, it bestows riches and prosperity. If Goddess Kali is worshipped on Tuesday, then it alleviates all kinds of ailments. Lord Vishnu, if worshipped on Wednesday, can lead to proper nourishment forever. And there are a lot of deities that can be worshipped on Thursdays, and it provides longevity. On Friday, if Devas and Brahmins are worshipped, then one can enjoy all kinds of worldly pleasures. And Rudra, if worshipped on Saturday, can ward off premature death. And finally, on Sunday, if Lord Sun is worshipped, then there is removal of all kinds of sins. Then the sages also said, what is the proper time, place, and the qualification of a person required for Dev Yagna? To which he said that the place should be any pure place. It could be a pure house, a shed. It could be a bank of a holy river, or any ordinary bank of any of the seven. It could be a summit of a mountain. It could be a shore of a sea, or any place that brings quiet to the mind. For the time, he said, it could be a time of lunar eclipse. It could be a time of complete solar eclipse. It could be any holy day. It could be a period where sun transits from one zodiac to another. It could be a period of equinox or tropical transit. The person who formed Dev Yagna, he said that any person who has unflinching devotion, has perfect knowledge, and also could be a yogi, could be an ascetic, or it could be a Brahmin who has recited the Gayatri Mantra more than 2,400,000 times, deserves to be worshipped, as he can quell all the sins of other people. And finally, he concluded that one person should do charitable deeds, like give charitable gifts to the needy. One can also give monetary offerings to the servants, and also gratify the Brahmins by giving gifts to them, and this can accord heavenly enjoyment. Today we'll be reading chapter 16, which is the modes of worship of clay idols and their results. Preeti Aunty will be reading in English, and Rinki Aunty will be reading in Hindi. Jai Guruji. Continuing to chapter 16, different modes of worship of clay idols and their results, the sages said, O excellent one, please explain the rules of the worship of clay idols by following which all desired results will be achieved. Sutaji said, you have requested for a very good thing. It bestows all wealth always. It suppresses misery instantaneously. I shall explain it. Please listen. It wards off premature and foul death. Even a timely death it prevents. O Brahmins, it bestows women folk, sons, wealth, grains, etc. The worship of idols made of clay, etc., is conducive to
to the attainment of all cherished desires in the world. From it, the devotee derives food and other edible things, cloth, etc. Both men and women are authorized in this. The clay should be brought from the beds of rivers, lakes, or wells. It should be washed well, pasted with scented powder and milk. The idols should be made with the hands on a raised platform. All the limbs, joints, etc. should be perfectly shaped with the respective weapons of the deity concerned. It should be seated on Padma Asana and worshipped respectfully. The five deities, Ganesha, Sun, Vishnu, Parvati, and Shiva, shall be usually worshipped in their images. But a Brahmin shall always worship the phallic emblem of Shiva. In order to derive the full benefit of worship, the 16 forms of service shall be observed. The sprinkling of water over the idols shall be performed with flowers. The pouring of water shall be performed with mantras. The food offering shall consist of cooked rice of sali variety. In the worship conducted in the house, 12 handfuls of rice shall be used. In the worship in a temple constructed by men, a prastha of cooked rice shall be used. In a divine temple, 3 prasthas of cooked rice shall be used. In the worship of self-risen image, 5 prasthas of cooked rice shall be used. If thus used, it gives complete benefit. By using twice or thrice this quantity, the benefit shall be greater. By performing this worship 1,000 times, a Brahmin shall attain Satyaloka. A vessel made of wood or iron, 12 angulus in width, 24 angulus in length, and 16 angulus in height is called Shiva. An 8th part of it is called a prastha, and it is equal to 4 kudavas. If 10, or 1,000 prasthas of water, oil, incense, etc. are used in temples of human construction, of saintly worship, or of self-risen idol, the worship is called Mahapuja. The ceremonial bath is conducive to the purity of the soul. The application of scented paste yields virtue. The food offering is conducive to longevity and gratification, and the incense yields wealth. The lighting of the lamp is conducive to knowledge, and the betel leaves are conducive to enjoyment. Hence, in all worships, these 6 items are scrupulously observed. Obeisance to the deity and repeated recitation of mantras accord all cherished desires. They must be observed at the end of the worship by men who seek both worldly enjoyment and salvation. At first, all items shall be gone through mentally, and then item by item, every rite shall be performed. By the worship of deities, the devotee attains the different regions. In the subsidiary worlds, also there is an ample scope for enjoyment. O Brahmins, I shall narrate the special types of worship to which please listen with faith. By the worship of Ganesha, the devotee shall attain his wish in this world itself. The days of special worship of Ganesha are Fridays, the 4th day of the bright half of the lunar months of Shravan, Bhadrapada, and Satabhishak, star of the month of Dhanu. He shall be worshipped duly on these days, or the devotee shall worship continuously for 100 or 1,000 days. As a result of the faith in the deity and in the fire, the worship yields sons or the different worships to the devotees. It quells all sin and the various hardships. The worship of Shiva and others on the respective days of the week is conducive to the purity of soul. In regard to Kamya rites, the basis is either the tithi or the star or the particular combinations of planetary positions. The day of the week is the basis of the worship of Brahman and others. There is no increase or decrease with respect to the days of the week as in regard to the tithi, star, etc. A day is calculated from sunrise to sunrise. The worship of the deities on the respective tithis is conducive to full enjoyment for the devotees. In regard to ritis of the meanest, the earlier part must be in contact with the night previous. In the worship of deities, the later part must be in conjunction with the day. If the tithi extends to midday,
That part of it which falls at sunrise shall be taken for the worship of the deities, so also in regard to the stars. Hence, the devotee shall consider all these aspects and proceed with the worship, repeated recitation of the mantras. The word puja is thus derived. Puja means the achievement of the fruits of enjoyment. By the right, one achieves the fruits. Jayate means is born. Good ideas, knowledge, etc. also are included in this. The word puja is used in this sense amongst the people as well as in the sacred texts. The daily and occasional rites yield their benefits in due course, but the fruits of kamya rites are instantaneous. The necessary rites are performed every day. The occasional rites are performed in particular months, fortnights, years, or on special occasions. In the kamya rites, one derives the fruits after the sin has been duly quelled. Mahaganyapati Puja shall be performed on the Chaturthi day of the dark half of the lunar month. That rite wipes off the sin of the whole fortnight and yields enjoyment for full fortnight. The worship performed on the Chaturthi day of the lunar month of Chaitra accords benefit for a month. The worship performed in the months of Simha and Bhadrapada accords enjoyment of worldly pleasures for Sundays or Saptami, or in the star Hasta of the month of Magha. The worship of Vishnu is conducive to the attainment of all desires and wealth if performed on the Wednesday, Dvachi day, or in the star of Shravan in the month of Jyeshtha and Bhadrapada. The same worship in the month of Shravan yields all desired wishes and good health. Propitiation of Vishnu on the Dwadashi day yields the same benefit as is deserved from the gift of 12 things with ancillary rites. The devotee shall worship 12 Brahmins on the Dwadashi day, assigning them the 12 names of Vishnu with all the 16 forms of service. He shall gratify the deity thereby. Similarly, 12 Brahmins shall be worshipped after assigning them the 12 names of any deity to gratify that deity. A person who seeks prosperity shall worship Parvati, who bestows all worldly pleasures on Mondays, Navami day, and in the star of Megsiras in the month of Kartika. The Navami in the bright half of the month of Aswayug accords all desired benefits. The worship of Shiva shall be performed on Sundays, Chaturdashi, day of the dark half of the month of Megha, on Ardhara star, and on the Maha Ardhara day. It accords all cherished desires. The worship is conducive to longevity, prevents premature death, and accords the achievement of everything. The worship of the different manifestations of Shiva with all the 16 forms of service and homage on the Maha Ardhara day in the month of Jyeshtha, on Chaturdashi day, or on the Ardhara day in the month of Megrisirsa is on a par with Shiva's worship and yields worldly enjoyment and salvation. The worship of the first deity of the weekdays in the month of Kartika is specially recommended. When the month of Kartika has arrived, the sensible man shall worship all the deities by giving gifts and observing austerities, homas, japas, restraints, and the 16 forms of service. The idols shall be worshipped with mantras. Brahmins shall be fed. The devotees shall be freed of desires and distress. The worship of deities in the month of Kartika yields all worldly pleasures, dispels all ailments, and removes the adverse effects of spirits and evil planets. The worship of the sun on Sundays in the month of Kartika together with the gifts of gingery seeds and cotton alleviates leprosy, etc. By making gifts of harkataki, chilies, cloth, milk, etc., and by installing Brahman, the elevation of consumption is brought about. By making gifts of lambs and mustard seeds, epileptic fits are alleviated. The worship of Shiva on Mondays in the month of Kartika suppresses excessive poverty and increases prosperity.
the worship of Skanda on Tuesdays in the month of Kartika, and making gifts of houses, fields, domestic articles, and utensils, lamps, bells, etc., the devotee gains eloquence without delay. The worship of Vishnu on Wednesday in the month of Kartika, along with the gift of cooked rice with curds, yields good progeny. The worship of Brahman on Thursday in the month of Kartika and the gift of honey, gold, and ghee affords the increase of worldly pleasures. The worship of elephant-faced Ganesha, together with the gifts of scented flowers, affords the enjoyment of worldly pleasures. Even a barren woman gets a good sun-making, gifts of gold, silver, etc. The worship of the guardians of the quarters, the elephants of the quarters, the serpents, the guardians of dams, the three-eyed Rudra and Vishnu, the remover of sins, bestows perfect knowledge. The worship of Brahman, Dhanvantari, and of the twin deities, Aswins alleviates ailments, prevents foul death, and suppresses all sickness instantaneously. Gifts of salt, iron, oil, pulses, krikuta, fruits, scents, drinking water, liquids in prastha measures, and solids in pala weights enable the devotee to attain heaven. The worship of Shiva and others early in the morning in the month of Dhanu enables the devotees to achieve everything gradually. The offering of enables shall preferably be ghee-soaked rice of the sally variety and well cooked. The offering of various kinds of cooked rice especially recommended in the month of Dhanu. The person who gives cooked food in the month of Margasirsa shall attain all desired benefits. The giver of cooked food in the month of Margasirsa shall attain destruction of sins, achievement of the desired objects, good health, virtue, good comprehension of the Vedic passages, good practices, great enjoyment here and hereafter, the permanent unification with the Godhead, and the realization of the perfect knowledge of Vedanta. A person who desires enjoyment of worldly pleasures shall worship the deities early in the morning throughout the month of Margasirsa, or at least for 3 days. No one shall be without sacred rites in the month of Dhanu. Rites in Dhanu Marsa, month of Dhanas, prescribed for the morning can be performed into the Sangava time. A Brahmin shall observe fast in the month of Dhanu and restrain all his senses. Till midday he shall repeat the Gayatri mantra. Till the time of going to bed he shall repeat the mantras such as the 5-syllable one, etc. After acquiring perfect knowledge, he shall attain salvation after death. Other men and women shall repeat the 5-syllable mantra alone throughout and take 3 baths every day. They will attain perfect knowledge. They shall secure the annihilation of the great sins by repeating their favorite mantras. The great offering of eatables shall be made to Shiva, especially in the month of Dhanu. The constituent parts of the great offering are as follows: rice of the sally variety, abhara by weight, pepper measuring a prastha, countable articles 12 in number, honey and ghee, a kudaya each, a drona measure of green gram, 12 varieties of side dishes, cake fried in ghee, sweets made of sadika rice, curd and milk, 12 prasthas each, 12 coconuts, 12 betel nuts, 66 clove leaves, camphor powder, 5 sugandhika flowers, betel leaves. This great offering of eatables made to the deities shall be distributed among devotees in the order of their caste. A devotee who makes the offering of cooked rice becomes the lord of a kingdom in the world. But by making gift of great offering of eatables, a man attains heaven. O excellent Brahmins, by offering this 1,000 times, the devotee attains Satyaloka and lights the full span of life therein. By offering this 20,000 times, he attains still higher world and is not born again. 26,000 great offerings constitute lifetime offering. Making gift of this is called great accomplishment. A devotee who makes this is not born again.
In the month of Kartika, on an auspicious day, lifetime offering shall be made. It shall be done at the time of the transit of the sun, on birthdays, on full moon days, annual birthdays, etc. In other months, when the natal star comes in conjunction with the planets, this can be performed. Even if the conjunction is only partial, the offering shall be made. One gets the benefit of dedicating oneself by that. Shiva is delighted by the dedication of selves and bestows the salvation of complete identity. This lifetime offering shall be made only to Shiva. Shiva exemplifies birth in as much as he has the form of both Yoni and Linga. Hence, in order to ward off births, the Janma Puja is of Shiva alone. The entire universe, consisting of the movable and immovable, is of the nature of Bindu and Nada. Bindu is Shakti and Shiva is Nada. Hence, the universe is pervaded by Shiva and Shakti. Bindu is the support of Nada. The universe has the support of Bindu. Both Bindu and Nada together support the entire universe. The unification of the Bindu and Nada is called Sakal Karana, and the universe takes its birth as the result of the Sakal Karana. The phallic emblem is the fusion of Bindu and Nada and is the cause of the universe. Bindu is the goddess and Shiva is the Nada, and the fusion of the two is the phallic emblem of Shiva. Hence, to ward off future births, the devotee shall worship the phallic emblem of Shiva. Goddess of the form of Bindu is the mother, and Shiva of the form of Nada is the father. Great bliss is the result of the worship of the parents. The devotee shall worship the phallic emblem for the acquisition of the great bliss. That goddess is the mother of the universe, and that Shiva is the father of the universe. Sympathy towards the son who renders service naturally increases in the minds of the parents. O foremost among sages, ordinary parents bestow hidden treasures to the son who renders special service. Hence, a devotee shall worship the phallic emblem in the manner of mother and father for the acquisition of the hidden great bliss. Bharga is the Purusha and Bharga is the Prakriti. Purusha is of hidden latent conception and Prakriti is of manifest inner conception. Since it is the father who conceived first and Purusha has the primordial conception. Unification of the Purusha and Prakriti is the first birth. Its manifestation in the Prakriti is called the second birth. The creature, dead even as it is, born, takes up its birth from the Purusha. Certainly the birth is induced by the Maya as an extraneous source. The word Jiva means that which gets decayed even from the time of birth. Another meaning of the word Jiva is that which is born, enmeshed and entwined. Hence, the devotee shall worship the primordial phallic image for unraveling the knots and nooses of the birth. The word Bhaga means primordial nature because it increases and flourishes. The Sabdamatra, etc., that is, all objects of enjoyment evolved out of Prakriti being enjoyed by the sense organs, the word Bhoga comes to mean that which gives Bhaga. The principal Bhaga is of course the Prakriti, and Bhagavan is Lord Shiva himself. The Lord alone is the bestower of enjoyment and not anyone else. The Lord who is the master of Bhaga is called Bharga by wise men. The phallus is united with vagina and vagina is united with phallus for the sake of the perpetual enjoyment here and hereafter. The devotee shall worship the phallic emblem which is Lord Shiva himself. He is the sun giving birth and substance to the worlds. His symbol is justified in the coming into the existence of things. Persons should worship Shiva, the cause of birth, in his phallic form, that which makes the Purusha known as called Linga, the symbol. The unification and fusion of the symbols of Shiva and Shakti is thus called Linga. The Lord delighted at the worship of his symbol was of the function of the symbol. That function being birth, etc., cease.
Hence, the devotee shall worship all the phallic emblem with the 16 forms of service and homage to acquire the benefit from Prakriti and Purusha through means inherent of externus. The worship thus performed on Sunday wards of births. The devotee shall worship the great phallic emblem on Sundays with the symbol Om. The ceremonial ablution of the phallic emblem with Panchagavya on Sundays is especially recommended. Panchagavya is the compound of cow's urine, dung, milk, curd, and ghee. Milk, curd, and ghee can severely be used with honey and molasses. The offering of rice cooked in cow's milk must be made with the symbol Om. The syllable Om is Dhvani Linga. The Swayambhu Linga is Nada Linga. The Yantra is Bindu Linga. M syllable is the installed Linga. U syllable is the mobile Linga. And the A syllable is the Linga of huge form. A person who worships the Lingas perpetually becomes liberated soul undoubtedly. A devout worship of Shiva liberates men from the bondage of births. A fourth benefit is achieved by wearing Rudraksha beads sacred to Shiva, and a moiety is achieved by smearing the holy ashes over the forehead. 3/4 can be achieved by the recital of mantras, and a man becomes full-fledged devotee by means of worship. A man who worships both the phallic emblem of Shiva and the devotees of Shiva attains salvation. O Brahmins, stable devotion can be found firmly established and flourishingly only in that person who reads this chapter or listens to it attentively. Jai Guruji. Now, Ricky. जय गुरुजी। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषि ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा उस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का, द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक पूर्व लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक पूर्व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक सेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं भूलिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग पृष्ठ कहलाता है जो 4 फुट के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू के शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है,
दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसके लिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ, जो तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सशस्त्र दिनों में 100 या सशस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों की हुई शिव आदि की पूजा की आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सब वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्ति तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का पर भाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वह देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्दों के अर्थ की इसी प्रकार योजना की गई है। पूर जायते अनेक इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। यह वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही अभीष्ट वस्तुएं हैं। काम भाव लोग वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ। पारमार्थिक ज्ञान ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति जी की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को ही की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हों उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मासों में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। करक की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनवांछित भोगों और फलों को देने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है।
उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माँ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्वारका का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी जो 16 चारों से पूजा करता है उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यज्ञ पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और हीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मृत्यु का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य हो जाती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यज्ञ तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्याकों को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का, त्रिकुट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ से होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए अभिषेक का नैवेद्य उत्तम बनाया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इन लोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन की उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल से लेकर संगम काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के
ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों को सदा जप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाश स्वरूप है, बिंदु शक्ति है और नाश शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधे का समावेश अथवा लय होता है, यही सकलीकरण है। इस सकलीकरणी की स्थितियों से सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव है, शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूज्य कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि यही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महतत्ववादी के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण क्षय भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयं भूलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है, वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चलिंग होता है, वह उकार स्वरूप होने से उकारलिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकारलिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 वेद हैं। इन्हीं 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय